parliament to election commission on over vote theft. How do you get the election in their way? Whatever's left of the Indi bloc, they choose to go for a march from Parliament to the Election Commission. That is welcome in a democracy. But the question is, we talk about manipulation of vote theft. Where has there been vote theft? If there have been transparent practices in the public domain with digital access to the voter rolls, and there you have Mr. Kharge, who is talking about the Indi bloc leaders working on a further plan. Do you wake up 8 months after an election? After an election where people have given you proof that the testimony is that of the electorate with the transparency of the electoral practices, and you have chosen to play conspiracy theory. The Karnataka Chief Election Officer has asked Rahul Gandhi time and again for proof of what fraudulent claims he's talking about on the 2024 polls. And after preliminary inquiry, it is found that there's no evidence to support one of his examples. And this is part of the ongoing political dispute, which is part of their conspiracy to try and defame the Election Commission of India. समझ में नहीं आता है कि इंडी ब्लॉक का बचा क्या है, लेकिन जो वो आंदोलन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये उनको भी पता नहीं, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं कि वोटर रोल में मैनिपुलेशन है, वोट थेफ्ट है, लेकिन जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसपेरेंट जवाब दिए हैं, पब्लिक एक्सेस है डिजिटल वोटर रोल्स को लेके, और वहां मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो तय करेंगे फर्दर एक्शन। 8 महीने बाद तो आप उठे हैं, लोकसभा के इलेक्शन के बाद आज आप जब टिप्पणी कर रहे हैं, लिखित रूप में कुछ सबूत आपने नहीं दिया, सिर्फ बेबुनियादी आरोप। कर्नाटका के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने स्पष्टीकरण दी है कि राहुल गांधी ने कोई सबूत नहीं पेश किया है। ये फ्रॉडुलेंट क्लेम्स जो है 2024 के पोल्स को लेके, वहां प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से ये साबित हुआ है कि एक पत्र नहीं दिया है, एक एग्जाम्पल नहीं दिया है और एक सबूत नहीं दिया है। ये जो है पूरा एक षड्यंत्र है, जहां वो अलेज्ड इरेगुलरिटीज की बात करते हैं वोटर लिस्ट को लेके, लेकिन एक भी कंप्लेंट नहीं किया है, सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। Uddhav Thackeray talks about protesting against corrupt ministers of the Mahayuti government. Maybe he's forgotten the khichdi scam and the graft complaints when he was the then chief minister and the reasons why he had to give up his own seat of power. Do understand from 2019 to 2022, there were several ministers and close aides who faced not only corruption allegations, including scams in the COVID center management, the Patrachal redevelopment, the Mithi River desilting, and extortion charges against Anil Deshmukh. All of this has been proven. The Mahayuti government has delivered a strong developmental agenda with welfare schemes and infrastructure improvement. So please, Uddhav Thackeray ji, don't talk about corruption when you were the most corrupt Maharashtra has ever seen. And as a political motivated, controversial, contrasting achievements of the opposition failures, which was all known in the public domain, the voter has also rejected you. उद्धव ठाकरे जी यहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, शायद वो भूल चुके हैं कि 2019 से 2022 उनके सरकार में इतने सारे भ्रष्ट मंत्री थे और अकम्प्लिसेस। आप भूल गए हैं कि कोविड सेंटर मैनेजमेंट का जो स्कैम था, पतराचौल का जो रीडेवलपमेंट स्कैम था, मिथी रिवर का डीसिल्टिंग का जो स्कैम था, एक्सटॉर्शन चार्जेस अनिल देशमुख के प्रति, ये सभी चीज पब्लिक डोमेन में है। महायुति
महायुति की सरकार ने सिर्फ प्रगति की राजनीति की, वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा कहा है कि करप्शन के जो एलिगेशंस है वो बुनियादी तौर पे सबूत के साथ स्पष्टीकरण दीजिए, और जो आप कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ बकबक बकबक करते रहेंगे तो जनता आपको एक मुंह तो जवाब देगी स्थानिक स्वराज में। ये एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइल किया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके बिहार के पोल्स में, उससे में 2 पॉइंट्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कि कोई भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है जब आप एक सेपरेट लिस्ट वोटर्स के लिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जब आप बना रहे हैं, तो वहां लॉ एंड रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 उसमें मैंडेट नहीं है कि आपको पब्लिश करना पड़ता है जो चेंजेस हुए हैं। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पूरा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिक डोमेन में स्पष्ट दिया है, जहां नाम है, जो वोटर है, उनके जो फॉर्म्स है, जहां फॉर्म नहीं रिसीव हुआ है, और हर एक राजनीतिक दल के पास ये हक है कि आप फैसिलिटेट कर सकते हैं करेक्टिव एक्शन बिफोर फाइनलाइजिंग द रोल्स। So the limited point being that no elector's name will be removed from the draft electoral roll without strict processes. So rather than spreading conspiracy theory, get these facts in the public domain. The Election Commission of India filed an affidavit before the Supreme Court regarding the special intensive revision of the electoral rolls in Bihar. And I think there are 2 important points. One, that no statutory requirement exists to publish a separate list of voters excluded from the draft electoral rolls, or to even provide reasons for their exclusion. The law and rules under the Registration of Electors Rules 1960 mandates no such publishing of lists until the draft stage. Despite that, the Election Commission of India have shared the draft electoral rolls in the public domain, including the names of the electors and with the forms which were not received. Now it is up to political parties to facilitate corrective action before finalizing the rolls. So I think it's amply clear the transparent practices of the Election Commission and the kind of misconspiracy or conspiracy theories that the opposition is spreading for reasons best known to them.